or last many years, because she belongs to our university campus, and madam and we are residing in the same campus. So it gives me immense pleasure to introduce here. And once again, I welcome to Dr. Neelu Shil, who is the speaker for this session. Welcome, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Dr. Verma. We are friends, we are neighbors, and I'm very friendly with his mother, who is very nice and pious lady. And Mrs. Verma, again, she is my young friend, and his two sons, they are all my favorites. So, first of all, I extend my blessing to all of you, recalling all the old association, which the good time which we have spent at KUK campus. Good afternoon, everybody. First of all, I want to seek permission, the chair and the co-chair of the session, that as this session has been named as technical session, but with their permission, I want to slightly modify it into experience plus technical session. I would like to share some of the experiences in my research journey, so that maybe it becomes a motivation for all of you. When Dr. Verma was introducing me to all of you, maybe the last line of my diagram was projected. It was that I have a passion of writing also, and that my secondary passion has enabled me to fetch Haryana Sahitya Academy Award, and I was also honored with amongst 100 women writers of the world. So I'll begin with why I gave this introduction. Because it's not only science which we do that we need to share. It's the kind of mindset we create for ourselves that is also equally important. Because wherever and whenever we stand in whatever duty, we must be able to qualify and prove to an extent of our own satisfaction. So I'll just narrate one of my couplets to you, and then I'll begin with the technical section. रहमती तो बरसेंगी थोड़ा इंतजार तो कर, रहमती तो बरसेंगी थोड़ा इंतजार कर, तारीफ तेरी सब करेंगे थोड़ा इंतजार कर. This subject was for the Gobind Singh College of Pharmacy, who are really creating landmarks and achieving milestones. So it all stands for all of you as a team. Now the subject which I have chosen for today's discussion is plant tissue culture for raising elite herbal material. I can take back to the year 1978 when I joined Punjab University as BSc school botany student. Incidentally, after a few months of our joining, there was a science exhibition in the university lab. And in that science exhibition, I was first year student in the group who were representing plant tissue culture. We never knew
that later on I'm going to adopt it as one of my choice, and I am going to work in this area. And you will simply laugh at me when I tell you the true story behind it. When we were to introduce plant tissue culture as a subject to the layman, because most of the visitors, they were not knowing the technicalities of culture. So to introduce plant tissue culture is basically test tube plants. My seniors, they were explaining to the visitors what is tissue culture, and they were showing them and showing those cultures to them. I was just listening. I was not knowing what is tissue culture because till then we were not exposed to that. And what happened? There was some refreshment break, and my seniors, they left for that break, and that whole you can say that stall came under my control. I was first year student. There was another friend of mine. She moved behind. I narrate exactly what we talked about and shared. She said, "Pitching okay, Kharja." Then that question, "Achan ke saath ka aane jawab." I said, "नहीं, ये बेइज्जती हो जाएगी. We should stand और जो भी हमें समझ आया हम बोलते हैं." वो मेरे पीछे खड़ी हो गई और मैं वहां पर जो भी आए वो कल्चर्स थे, फॉर्म प्लांट था, उसको टेस्ट ट्यूब में ग्रो किया हुआ, एक और था फ्लास्क में, वो भी हाँ, एक तो मैंने वो जो डिस्क्रिप्शन मेरे सीनियर जितनी मैं देख पाई मैंने दी कल्चर मीडिया है, इसके ऊपर जो प्लांट हमने टिश्यू कल्चर लैब में उगाया, और दूसरे में साथ में कंटेमिनेशन की फंगल, बिकॉज आई हैव इंक्वायर्ड राइट इन द बिगिनिंग कि दीदी ये क्या है. शी सेड एक खराब हो गया, इससे फंगस आ गई है, दसना नहीं है किसी में, ऐसा करके दिखा रही कि वो फंगस पार्ट पीछे हो जाए और राइट प्लांट जो है प्रोजेक्शन में. बट व्हेन द चार्ज केम ऑन टू मी एंड विजिटर्स दे वर कमिंग, what I did, I explained the life culture, and then I took up that and I said, if the culture becomes wrong due to wrong technique, there is fungus hardening. I explained the fungus part. The message is, we didn't hesitate to share the drawback and failures. And when my seniors they came, they started hearing and they said, "How much good checks take kariye subah se hum chal rahe hain." And when I was explaining that fungus part, this why you are explaining? मैंने दीदी से पता कैसे लगेगा fungus कैसी होती culture में. So probably that was the seeding stage when I got connected in the year 1978. And after first year, I started claiming amongst my friends, I am going to do PhD. But PhD भी करूँगी plant tissue culture. So that is how I got into this area. And I learned with failures and with blessings of my teachers, my seniors. Then later on, my students who made a very good team with me. And gradually, you see, I got into the area of working with very tedious and very problematic medicinal plants. Today, in my lecture, I have not brought all of the data because I knew the limitation of time. But I tell you that one of my students very effectively worked on aloe vera, and in our lab, from single plant, we could identify the best 10 explants sources, and per explant, I will explain you what is explant. Per explant, there were 40 buds. So you can imagine, in one test tube, we could raise
more than, if I'm right in my mathematics, 400 plants. Thereby, even Mother Nature, it gives us 2 to 3 sprouts after 1 year. So what we can expect from one matured mother alive plant, at the most 3 or 4 plants. And I'm giving you the data of single test tube. On a single extent, a single plant sacrificing one mother plant, you could raise 400. So that is what is the potential of plant tissue culture. And the title, so mentioned, plant tissue culture for raising elite herbal materials. Why I use the word elite? You know, we have already gone through the corona phase where we were consuming not many cars, herbal, and rather world over or even WHO agreed to it that in India the gravity of corona was less as expected. It was somewhat because of the formulations which came from the kitchen of our mother. So that is what is the strength of herbal. And as you are pharma students, you know that biopharmaceuticals is one of the most upcoming and potential area of work. WHO and all the countries in unison, they have agreed that when any patient comes to them, let's give a trial of holistic medication. Holistic is yoga therapy से, naturopathy से, herbal से, allopathy से, homeopathy. But ultimate aim should be that the patient recovers well and is in less pain, and the health for all mission is good. Now this slide is not from plant stories, but a message in the beginning and a message in the end. Please remember this slide. I'm going to ask one question from the students. That what was the interest of showing this slide to them? Let's go to and forth to the facts. Now, let's begin with what is the strength of our India as a whole. We know India has a wide geographic biodiversity. We have deserts, mountains, aquatic, marine, all type of combination exists. And I must inform you that one area which is still lacking and not at all explored is the marine flora. Fauna and flora from marine. And immense potential lies there. We are very short of ethno-medicinal knowledge in oceanography, we can say. There is one institute in Goa, but it is very challenging and still students are not taking up. World has already taken a start on biodiversity. Again, xerophytic plants, shrubs, herbs, aquatic plants, saline water, bacteria. I'm not really going to talk about the plant wealth, it is the microbial wealth too, simultaneously. Okay. Third area where we stand standful as India is seasonal variation. जो गर्मी में है वो गर्मी में मिलता है, जो सर्दी में उगने वाली है वो सर्दी में या बारिश में. So we have all that combination of seasons and we are strengthful in that. Then
Fourth is traditional medicinal knowledge. Dear students, this is one of stressful areas. I must inform you that I took lead start in this area. But two of my students, they did their doctorate in this area. And I tell you, this is a very, very challenging and this area has a lot of potential in identifying the drug molecules, new drug molecules. How I can claim this? When I was a faculty in Kurukshetra University, one fellow from research scientist from US, she selected botany department, Kurukshetra University, for Fulbright fellowship. She stayed with us for 1 year. Why she selected Kurukshetra? Because she wanted to gain knowledge in traditional knowledge, traditional meditation, and more so taxonomic strengths she wanted. Because whatever we can prove in wet lab after 10 to 15 years of input, but if we combine ethno-medicinal knowledge along, this time comes to a reduction scale of 3 to 4 years. We get very good strengthful indication as to what to select and what not to select. Then, of course, Charat Purnita, Ayurveda. Now, this is, I want to introduce what is heat. You understand the dictionary meaning probably. But elite is, this is the holy voluntary and practice of Kurukshetra, where Lord Krishna gave the Gita discourse to Arjuna. This is elite from religious perspective. We don't want that this tree should vanish. We want to save, we want to conserve. And many so, both Bodhi tree or many so. Dukhanjali Dairy, Gunanak, जैसे कुछ मंदिर है अमृतसर is again done. Now, what do we mean by elite in herbals? So I've taken an example of Rahulfia. Commonly, we understand that there is Rahulfia tetrahydra, Rahulfia coffee full. We know that certain therapeutic drugs, they can be extracted. But imagine if we keep on, you see, exploring the drugs from the, let's say, serpentine, and the propagation rate is low, then what will happen? Very soon, this will be rare or will always be near extinction. So what we need to, and what already in US the research is going on. They say, let's explore live plant species too. If that anti-cancer compound is present, let's say tetraphyline as well, why not to also explore it? But your question may be, the serpentine, so let's say 5 milligram per 100 gram of the tissue weight milligram. So just 1 gram, 1 milligram. What is the fun? Why we should? Our answer I'll give. The medicine is Calotropis lucera, another medicinal plant. Now see, we raised callus from Calotropis lucera on different media. And another variety was Calotropis giganteus. Two varieties of. And there, this is for giganteus on different media. I'm not going into those details.
Now, the question of having 5 milligram per 100 gram of tissue versus 1 milligram per 100 gram of tissue. Now, when we compare the active constituent, if extracted from the plant, if it is 5 milligrams per 100 grams, and when we raise callus from different plant parts, it rose, let's say hypothetically, to 40 milligrams per 100. So how many times increment? Nearly 8 times. And when we change the media, it was, let's say, 200 milligrams per 100 gram of the weight. So in nutshell, with this value, I'm trying to explain that if we just focus on in vivo grown plants or mother nature plants, there will be a lot of pressure on the existing flora, and time will soon come that we will be deprived of that constituent. There will be no replacement. So for this, need to work on the strategies. One, to multiply those plants in temples. Secondly, to use for biotechnological methods whereby that active constituent, it can be scaled up. So we simply compare the extraction efficiency on aqueous, ethanolic, and the ethanolic 50% and 90% ethanol. So this data is clearly showing that in 90% ethanolic, callus showed maximum extraction efficiency. That means that active constituent, it showed multiple effects in that. So important findings in this simple callus cultures, which were based on, I'm not going into the details of the media trial. I tell you, we tried 20 media compositions where we changed the growth hormones or growth regulator hormone, and results were drastically, you see, surprising, drastically. Now, how to mass multiply? So the option is micropropagation, and this is the list of nutrient media and how we proceed with micropropagation. We just did, let's say, the outer circle, leaf extracts. So the beauty of plant tissue culture is, otherwise, nature, we sow the seed and we expect the plant. But here, if we have a single mother plant, which is even diseased, it is near death, we can still recover millions of, just giving hypothetical fake numbers. You can believe me, you can raise millions of plants from that single, even diseased plant. How? You can select leaf extract which is safe in the mother plant. We can raise adventitious birds. Those birds become liquid, and again they can be grown into. Another is that here I am trying to give you the variation. You can select root, leaf, stem, nodal form, internodal, or you can even take anther. You can even select any other plant which can yield billions of plants. So, basically, micropropagation, we proceed through four sub-stages. One is establishment, multiplication, and acclimatization. Now, in red, stage 0 is the one which requires care of further. I tell you, if you are going to enter into the research field relating to plant tissue culture,
Then try to select the extent from the maximally cared mother plant. Because that outnumbers your expectation of yielding successful plants. This is one, stage two. There you can see we simply started with one bud. Number of birds they have multiplied. So in stage three, we isolate, single out those birds out, and they are rooted, fit with the plants, finally to the nature. So the root is simple. I tell you, the countries so who have already taken the medicinal arena, North Korea, China, and Israel, the most. Israeli scientists and Chinese scientists, what they claim, they say, you just give us 4 acres of land with greenhouse facility, and we can meet with the herbal needs of the world. क्या कहते हैं 4 एकड़ लैंड देंगे उसमें ग्रीन हाउस टिश्यू कल्चर and with that they will produce herbals to the extent that herbals in the state side can be available to the world. Ginseng in Korea, China, they are already there is no meeting point. The role of growth regulators in plant tissue culture is very, very important. Sometimes failure comes because there is wrong communication. Select. क्या आपने select को retarded करना होगा? आपने मीडिया में डाल दिया promoter. What is the difference? For example, you are dealing with the callus, and callus has already been employed life. Employed is employed life structure, and the full potential growing. But what happens in that stage if we add promoters? Those employees with again you are that callus, and we are not able to recover. So at that stage, you have to stop. You have to put a pressure of nutrient stress as well as growth stress, so that those embryos they can grow and grow. So this is one of the most important key I have handed over to you. Working with plant tissue culture. So many scientists simply say that they keep on adding excess of plants, promoters, and the combo, for example, cytokinin and oxygen combination, which so once you are into that area, you can bring wonders the research. So this is again clear now. So this is how if you add cytokinins, more of shooting. But then you have to single out those shoots and take out the roots from the base. You have to transfer oxygen media or to cytokinin combination. So in plant biotechnology, this plant tissue culture is rated as one of the nurturing branches as independent branch. And if you are working in genetic engineering area, when you think about the genetic transfer, there also, if plant tissue culture is not linked with the genetic engineering fermentation, you cannot grow them in open as per regulations. And you are required to multiply them to this vegetative means of multiplication instead of going via seed to seed. So
ये मोटी रहा नेक्स्ट so the home technique जो घर में remote finger try the same. So this is again for that these are various applications of this technique. Chromaclonal variation, germ plasm conservation. I was reading one news article जिसमें उन्होंने 30-year-old फ्रीजन मदर एग को मल्टीप्लाई किया इन विट्रो और फिर ट्विन बेबीज दे वर बोर्न. So after 30 years of cryopreservation, the recovery of twins has been reported. Similarly, germ plasm conservation can go for cryopreservation in possible. In vitro hybridization to multiple molecular forming. The last one is very, very important, and it is in practice in many of the communities where the secondary metabolite production is being obtained. So, time is going straightforward. Now, let me come to this book, a very interesting study. It was from the year 1997, okay, 98, 98, I think. One of my students, he wanted to do his MSc project in BIM, and it is that whenever we start with any project, we sit across the table, we have 2-3 discussion rounds, and I try to put what we can do. Then the student chooses. During those discussion rounds, I gave that we can also work on Recopa besides the other plans. And somehow, Amarpal Smithy, that was the name of him, he selected this plan. He said, Madam, Brahmi plant is very important. When I was in school, when we were Brahmi ka sharbat kafi pilati thi, I want to work on this. I said, okay, it is your name. We will work on it. So second problem हमें क्या आई? He visited number of nurses. He visited number of herbal gardens, but nowhere we could fetch the stock plant. Recopa में मिलेंगे. उसने वैध की भी पूछती वो कहते हैं हमारे पास तो सूखी हुई जड़ी बूटियां आती हैं. But कहाँ से ये आता है? And ultimately he had some relative in Indore, and they reported कि आपको यहाँ पर एक नर्सरी में recopa का plant मिलता है. So he went to Indore by train and brought 2-3 pots. And these are some of the, as I mentioned, memory enhancer. Many parents use it. Antioxidant, anti-cancer is a wonderful magical drug. Why the reason why I selected this. Major problem with this plant that in nature, he visited even hilly areas where it was imported. So almost for 2 months, he kept on hunting for this top plant hatching. So this is very much in demand, but as I mentioned, availability नहीं. और बहुत से ऐसे brand हैं, I don't want to name, which for our satisfaction. इसका हमने HPLC वगैरह भी कराया और फिर recopa है ही नहीं. सिर्फ हरा रंग और बच्चे को आप पिलाओ. Now the problem क्योंकि इसकी बहुत poor circulation.
और होल प्लांट एक्सट्रैक्ट यूज होता है, जो भी जिसको एग्रो मेडिसिनल नॉलेज है या तो फार्मा कंपनी वो सीधा जाके पूरा का पूरा ले आए विदाउट फील वरी what will happen in next. When we were students and we were taken for plant collection, I still remember one of my esteemed teachers, Uncle D.S. Roy, he will always say, कुछ पौधे छोड़ो इसी साइड पे ताकि वो नेचर में मल्टीप्लाई हो. So we will not permit all of us to pluck the plants from one source, say hunt for it at other side. यहाँ से 2 बच्चे लेंगे, यहाँ से 4 लेंगे. So that is my personal. Now, when these plants they are shifting from its native side, and these nursery वाला लोगों को भी दिक्कत क्यों आ रही थी कि वो लाते तो थे पर वो कहते हैं कि ज्यादा पानी दे दो कभी मर जाते काम दो कभी नहीं. They had very discrete water requirement. Now, what we did, we started with the nodal calyx plant. And as I have narrated the micropropagation steps, exactly or whatever we planned, accordingly we did it. But in addition, we gave our cultures, those plant cultures, abiotic stress on manganese sulfate and magnesium sulfate that provide different concentrations. And along with the growth water and growth promoters and sugar content. So this is how we started. From single nodal extract, then you can see on basal plus hormone. And that was possibly on the basal kidney without any hormones. See very well in the growth and well. And this was when we gave them a stress of magnesium 600 micromolar or magnesium 15 micromolar. You can see incidentally rooting stage also. The age of all these cultures is same. Basal plus hormone, then basal medium, hormone plus magnesium or manganese. This is with cadmium. Different concentrations. This is the when we gave over concentration up to 700 retardation of. So that means they require a very discrete range of concentration to be grown and nurtured. Now this is for manganese. You can see, but maybe you are not able to properly make presentation. But the stem size and the leaf size was also very healthy. Now see, after 8 weeks, such a problematic plant, which was not available almost in northern India as a stock material, we could raise so many plants. And if per shoe, per plant, let's say, if you can count nearly 300 nodal extents, इसको फिर एक बार एक रूप में डाल देंगे तो एक क्लास से हजारों पौधे के हजारों के लाखों बने लाखों के बाद you will reach any millennium or millennium. So this is the beauty of the plant culture and this is the and with the manganese method, you can see in 8 days this was the result. इतने पौधे हो गए कि हमें टाइम से रखने के लिए उसको रखना पड़ रहा था, बट पौधे प्लग को भी बाहर फेंकने को दिया. That shift us to other
using that so that we can grow further. But अगर ये time का constraint ना रखा होता हमने 8 weeks की बजाय 4 weeks में तो fresh development grow, maybe the number would have doubled or tripled as per this. So this is the data. This is concluding out of this. So study various parameters, leaf size, biomass. So in all aspects, when we compare the qualitative or quantitative data of this plant, what will you do? तो 2 महीने का टाइम तो हंटिंग में लगा, but in these 2 months time, that student he could produce millions. और हमारे पास pots की कमी पड़ गई, we were short of funds to buy a pot, पिछले पापों में भी इसने उगा दिए, and we gifted these plants to many people around us so that they can be. और बहुत सारे लोगों को हमने gifted on stage, memory के तौर पर. So, now, dear students, ultimately it is not that we could be successful. As I mentioned, aloe vera was a wonderful success. और उस स्टूडेंट को कनाडा में उस aloe plant की प्रोटोकॉल एस्टैब्लिश करने की वजह से ही जॉब मिली. And he is working in one of the private issue करते हैं volunteers there, and he is spinning money like that. What is the message that biotechnology today can answer? अब ये तो हुआ कि plants को हम multiply कैसे करते हैं? If some plant is endangered, if some plant is rare, how to multiply? But second point is that in case you want uniform, क्योंकि pharma company में जाके आपको bio activity और bio similarity ये 2 चीजों पे भी फोकस. So if all the time you are going to the nature and fetching the material, there could be variability. But if we move via plant tissue culture, the material, elite material which is produced, it will be having more of active constituent. और active constituent भी किस stage तक करेगा वो मैंने बता दिया कि एक टाइम आ जाता है that your brain starts turning कि अब इसके beyond में क्या data analyze करूँ. It is beyond my means to work on this data कि इतना active constituent भी हम. और secondly, if you want to go for germ plasm exchange from India, let's say you want to share plant material with some scientists sitting in Lima, Peru, then no other plant material can be shared except tissue culture. These plants, they are virus disease free with higher active constituent, and also at will out of season also you can do. Means let's say in nature this plant is available only in the month of March, but through tissue culture we will have the supply in the month of September, December. So this is very, very, you see, fruitful for any pharma company who wants to enter into herbals and also wants to ensure the best of bioactivity, the best of biomass production, best of the phytoconstituent. So with that message, I want to conclude. If you have any query, then you can ask. Or as per the chair and co-chair of this session, I'm really thankful for giving me this opportunity. A very good afternoon to everybody. I have been assigned
to sum up the session. So, before saying thank you to ma'am, I would like to heartily congratulate for being in top 100 women writers in the world. Thank you, ma'am. She spoke about the science behind the tissue culture. Not only science, she also gave a touch of philosophical things to the tissue culture. She touched upon, she started with a few lines. The Christopher is talking about patience. So you should have patience, whatever you do in your life, you should have patience. And then she spoke about like how confident she was when she was in first year. When people used to ask her, when people usually students shy to come and speak in front of everybody. She was very confident, and everybody praised her for doing that, which instigated her to do PhD and to choose a line which she was very much interested in. She then spoke about aloe vera hair. Next plant, she made 400 plants. That was quite commendable. And then she spoke about different ethno-specific data from drug molecules, which reduces your time from quite a few years to quite a few months. And then she touched about a few important any herbal plants like banyan trees and around. Then she talked about Ecopark and ginseng, which is Chinese are leading and Koreans are leading. And she spoke about then how Koreans are Chinese are so confident about what they do. In the gist of that, she also said, why which India, which is so much has herbal diversity, so much herbal richness, why can't he say the same thing? You give us this much of land, we will supply the herb to all the world. Why only Chinese and Koreans? Then she talked about germplasm conservation. We know that most of our germplasm before the government actually made a rule for conserving it, we have to beg to US because they have patented our germplasm. Other foreign countries just patented our germplasm. So that was a very important need for our country to have conservation in our germplasm. Then she talked about genetic engineering, where she talked about how you can use, when you want to increase the metabolite in the plant, you can whether use different media to increase it, or you can use genetic engineering. You did get a chance to do of these things for heavy metals and personality work. I could succeed in that. But a very important aspect of increasing your material record. She showed about Tacopa previously made thousands and using lakhs, thousands and crores, and I don't know, where there was no stop in the digits. So you can make so many plants and become billionaires. Maybe one day somebody can take a startup and become billionaire. That's what she inspires her students also. Thank you very much, ma'am, for being such a fantastic and such inspiration. Thank you. Thank you, everyone. Though I'm taking the liberty just one month, that particular student, Amar Pal, who I made a mention of, उसको शुरू में क्या बनाया गया? तेरा तो प्रोजेक्ट अभी शुरू ही नहीं हो रहा, तू क्या कर पाएगा? ये प्लांट ही नहीं मिल रहा, तू उस प्लांट को छोड़ के दूसरा ले ले मैडम से कहके. Even I asked him कि अगर आपको बेटा प्रॉब्लम है, it is time bound, let's shift over to other one. But he said, मैम एक बार ट्राई तो करता हूँ, ऐसे उसने मुझे कहा. और कई बार मुझे कई दिन मिलता नहीं था. I started suspecting कि ये बच्चा शक्कर from फ्रेंकली. मैं इसको क्वेश्चन मार्क मोड में डालने वाली थी, तो उसने मेरे को ये फॉर्म पर इंदौर की नर्सरी से मैडम मिल जाएगा, तो मैंने कहा चलो इसका मतलब इज वर्किंग. और जब उसने 5 महीने में उसका सारा प्रोजेक्ट
objective tissue culture is such a hectic affair to work with. He could complete in 5 months और उसने लिखना शुरू किया, बहुत अच्छा लिखा, पेपर्स उसके पब्लिश हुए और बाकी स्टूडेंट्स का 1 साल तक गया. So that means the spirit of the student also mattered. So this is the compliment and carrying home message कि अगर आप determined खड़े हो तो भगवान भी आपके साथ होते हैं. और बाकियों ने 1 साल में किया और उस बच्चे ने 5 से 6 महीने में वो प्रोजेक्ट प्रैक्टिकली कंप्लीट कर दिया. So thank you everyone for joining us. Thank you very much, sir, for conducting the session. Thank you very much. Now I would like to request Dr. G.T. Gupta sir and Mr. sir to please felicitate ma'am. Please, sir. Thank you very much, sir. Ma'am, please, sir, I request you to please felicitate some of our resource persons also. Sir, ma'am. Ma'am, please felicitate some of our resource persons also. First is Dr. Kamal Sharma, Principal and Director, ACER, Haryana. Please, sir. Dr. Sukhbir Lal Khokra, Assistant Professor, Kshetra University. Dr. Suresh Beniva, Principal, College of Pharmacy, Zen. Dr. Devendra Kumar, Assistant Professor, UHSR, Rohtak. Dr. Surendra Verma, Assistant Professor, Kshetra University, Kurukshetra. Mr. Ankur Agarwal, Associate Professor, JIPSR, Gwalior. Professor Santosh Verma, Principal, Quantum University, Roorkee.
Dr. Rahul Taneja, scientist IPL engineer. He is one of the alumni of our college and he has been also awarded for his special contribution in the field of IPL. Mr. Amit Jha, Balaji Distributors. I also request the team members of Pharma if they are here. Amit Jha, sir, please. If the team members of Pharma are here, they are also awarded for their special contribution in diligence and hard work in the field of pharmacy. Thank you very much, ma'am. Now, for the next technical session, I would like to request Dr. Sharma to chair this session and Dr. Bharat Rashar sir to co-chair this session. Please, sir, come up with us. Let's introduce Dr. G.D. Gupta. Professor Dr. G.D. Gupta is currently working as direct principal in ISF College of Pharmacy, which is an autonomous college and situated in Moga. It is NAC accredited college with grade A. He did his pharmaceutical education B Pharm in 93 and M Pharm in 95 from Dr. H.S. Gaur Vishnu Vidyalaya, which is a Central University of Salem. Completed his PhD in 2000 from Department of Pharmaceutical Sciences in Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore. And recently, Dr. Gupta received one of the prestigious award as Principal of the Year 2021 by APTI at Mysore during 25th APTI National Convention, APTICON. He has contributed more than 2 decades of dedicated service toward pharmaceutical education and research. Professor Gupta is a prolific writer of professional books and authored 19 books, published research papers, 107 publications in various reputed peer-reviewed journals, encompassing 42 reviewed articles. Besides, he has been instrumental in getting 5 design patents and 2 filed patents, 3 transfer technology, and received research projects from many professional bodies such as AICT, DST, DBT, CSIR as principal investigator and co-principal investigator, also in the capacity of coordinator. He received grants from DST, DBT, and AICT under various projects and
He's guided 40 doctor and 98 postgraduate research project students. His prime area of expertise and interest have been pharmaceutics conventions and novel drug delivery system. He has a widely traveled and shared his experience through more than 100 invited talks at prestigious forums in India as well as abroad. Dr. Gupta has his research team have also presented more than 125 papers in various conferences, symposia in India as well as abroad, and many papers have been awarded the Best Paper Award. He is also a member of editorial board and advisory committee of various national and international journals of repute. His contributions have fetched him several national and international awards: Education Excellence Award, Best Poster Paper Award, Man of the Year 2000 from American Biographical Institute, USA, Best Director Award by Society of Pharmaceutical Innovation and Research, awarded as Principal of the Year Award 2016, Best Director Award by PET CRS, 5th Faculty Pending Awards 2017, Eminent Scientist Award by Nirali Prakashan 2019, Atal Samastha Award by India Society of International Auditoria, Nepal on December 25, 2019, Spur Fellowship Award by Spur during Spur 9th Annual Conference and Exhibition held at AKS University, Stern 2020, received National Award as Eminent Academic Leader 2020 by International Institute of Organization Research and also recognized as Fellow Member Awardee 2021. Dr. Gupta is also a recipient of many other awards. It's a big list. We cannot speak as much. So he's a chairman, Board of Studies, Pharmacy, IKGPTU, Jalandhar, ex-president, Society of Pharmaceutical Education and Research, member secretary, Research Advisory Council, chairman, IAC, ISF, Academic Council, IKGPTU, executive member of the DBT Central Body, executive member, ITA Punjab branch. His chief advisor is 7C Human Rights Bunch, Punjab President, Alcohol Free Society, and Dr. Gupta is a life member of various professional societies. So it's a big resume to read. So as much as big it is, I think a big round of applause for Dr. Gupta, and I would like to invite you for his valuable speech. Thank you. So, good afternoon, everyone. So, first of all, I am thankful to chairperson and chairperson, and special thanks to the chairperson for nice introduction. So, as I know that, first huge, grand, successful inaugural, after that delicious lunch, and then one technical session, and most of the students waiting for the cultural program. Between this is one of the session. So obviously it is difficult to the speaker, but I will try my best. I don't take the technical and very huge lecture. This is direct related to the students and not any big research. Before we start any research, any job role, any work, you need to the work. So for this purpose, I have selected the topic is think and do. So half of the topic is purely based on the motivational system. Second one is the research in pharmaceutical science. What is going on and what is the need? So think and do. What do you want in your life? यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, किसी ने अपने जीवन में सोचा है क्या चाहते हैं आप? What do you want in your life? क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? धन चाहते हैं. What do you want in your life?
पैसा चाहते हैं. Do you want in your life is the money? Second क्या चाहते हैं after the money? Do you want an excellent family? एक अच्छा सा परिवार हो, अच्छा सा घर हो, जिसमें सुख सुविधाएं हो. And then you want to enjoy. जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर उनको सब चीज से छोड़ दिया जाए, then what do you want? Enjoy, enjoy, and enjoy. What's the after goal of the life? Oh my goodness. एक sweet सी girlfriend boyfriend. क्या इससे लाइफ चल सकती है? इससे लाइफ नहीं चल सकती है. Another thing is sweet, beautiful, smart husband or wife. और सैलरी कैसी होनी चाहिए? हाई होनी. हमारा जॉब रोल खत्म हो जाता है. And you want a good health. After that you want to stress-free life, happiness, respect, and name and fame. मैं जानना चाहता हूँ happiness, respect, name and fame. कि अभी अभी अमेरिका में एक छोटी सी शॉप खुली है. आप उस पे जाते हैं तो मुझे 1 लाख रुपए का रिस्पेक्ट दे दो. वो एक थैले में डाल के दे दीजिए. अब इंडिया में खुलने वाली कोई ऐसी फैक्ट्री, कोई ऐसी दुकान, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है क्या जहां पर आपको हैप्पीनेस, रिस्पेक्ट एज वेल एज द आपको एक नेम एंड फेम दे रहा हो? आई होप देयर इज द नो सॉन्ग. और आज की डेट में प्रॉब्लम ये है कि हर व्यक्ति के पास वन ऑफ द बिग चैलेंज जी है. तो हर व्यक्ति देयर इज अ लॉट ऑफ चैलेंज कि जिए तो जिए कैसे, और इस जिए तो जिए कैसे का दिस इज द बिग ऑफ द कंफ्यूज. तो आज हम कोशिश करेंगे कि हाउ यू कैन कम आउट. लेट अस कंसीडर यू कैन डू द गुड रिसर्च, दैट्स ओके. What is your mental status? When we are talking about the IIT pupils and some of the technocrats, what is the come out? Stress बढ़ रहा है. अगर उनसे पूछिए stress, what types of the stress? कहाँ से आ रहा stress? क्यों आ रहा stress? And who is the responsible? There is the no any answer. Even that they are earning a lot of money. तो भी stress आ रहा. तो उसके लिए homework ये है कि most of the time we are confused and we are unable to understand what is the need of your life. So here is ये 5 क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ें. पहला क्वेश्चन है, क्या आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं तनाव महसूस कर रहे हैं? यहाँ पर इस ऑडिटोरियम में, सेमिनार में जितने लोग बैठे हैं, एक भी व्यक्ति को इंक्लूडिंग मी कि आई हैव नेवर स्ट्रेस, आई हैव नो स्ट्रेस. अगर वो कह रहा है, झूठ से ज्यादा और कुछ भी नहीं है. झूठ से ज्यादा कुछ भी नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओवर हियर. व्हाट आर यू फीलिंग ड्यूरिंग द स्ट्रेस? क्या फील करते हैं? खुद का नुकसान करना या दूसरे का नुकसान करना? क्या करना चाहते हैं? व्हाट आर यू फीलिंग? कहां से है? स्ट्रेस इज जनरेटेड बाय अदर्स और स्ट्रेस इज जनरेटेड बाय स्वयं के द्वारा स्ट्रेस जनरेट है या आप करते हैं? और अंत में विच इज द मोर सीरियस स्ट्रेस जनरेटेड बाय द सेल्फ और गिवन बाय द एज पर द स्टडी 80% ऑफ द स्ट्रेस इज द सेल्फ जनरेटेड. हम स्वयं जनरेट करते हैं. only near about the 20% of the stress sometime it is given by the others. So gentlemen, you need to the work one a body language. अब मैंने मैथमेटिकल स्ट्रेस की परिभाषा दी है कि स्ट्रेस इज द आउटकम इज द हाई. तब होगा जब आपके पास रिसोर्सेज इज ग्रेटर देन प्रेशर. प्रेशर अगर कम है और रिसोर्सेज ज्यादा है, आउटपुट विल बी द हाई. Resources is the low, pressure is the high, then you are under the condition of the stress. So stress equal to response is greater than the pressure. ये आप दिमाग में रखें. और इसके लिए हमें क्या करना है? Think and do. सोचो और करो. क्या करना है? ये तराजू बनाया हुआ है. Check yourself. What types of the facilities at your home, in your surrounding? जैसे कई बार कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर हूँ. वेरी गुड. फिर क्या होगा? क्रिकेट कभी नहीं खेला,
तो फिर क्या होगा कि स्ट्रेस हुआ कि मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर हूं लेकिन खेला किसी लेवल पर। नंबर ऑफ टाइम आई फील दैट द हार्ड वर्क बट देयर इज द रिजल्ट। एनी टाइम यू हैव एबिलिटीज, एनी टाइम यू हैव अप्लाइड योरसेल्फ, उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेंगे तब आप बैलेंस करेंगे व्हाट इज द नीड, आवश्यकता क्या है, एंड व्हाट यू हैव, देन दिस इज द बैलेंस फैमिली। ये हमारा है स्ट्रेंथ नोन बाय अदर्स, स्ट्रेंथ नोन बाय यू, वीकनेस नोन बाय अदर, वीकनेस नोन बाय यू। आज मैं दावे से कहता हूं अगर आपके पास एक अच्छा मित्र है, एक फ्रेंड है जिसको आप सो कॉल्ड फ्रेंड कहते हो, और वो आपकी वीकनेस बताने की हिम्मत रखता है, वो आपका अच्छा फ्रेंड है। कई बार वो हमारा सबसे खराब फ्रेंड होता है जो हमारी वीकनेस है। So check yourself in which quarter you are. Strength known by you. Yes, what is your strength? Everybody knows what is the weakness, what is the strength. But we are not doing the work on our weakness. Sometimes our friend, they know your weakness and they come to you, तो हमें बुरा लग जाता है क्योंकि हम उन्हें इम्प्रूव नहीं करना चाहिए। तो किस क्वाड्रेंट पर आपको काम करने की जरूरत है, दिस इज इम्पोर्टेंट। प्रायोरिटी इन योर लाइफ, सबसे पहले फैमिली, हेल्थ चाहिए, फैमिली चाहिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ, मनी, एंजॉय, और छठी लाइन खुद ब खुद हमारे पास आपकी आदत। लेकिन आज का युवा 7 पॉइंट से चालू होता है और पहले पॉइंट तक खत्म हो जाता है। सो जेंटलमैन, चेक योरसेल्फ, एवरीथिंग इज द स्टार्ट विद योर हेल्थ। So maintain the decorum, maintain the health status, either physically, either mentally, or either behaviorally. Because nowadays behavior of the student is going to the destroy. तो इस पर आप होमवर्क करें। एंड मैं हमेशा कहता हूँ जीवन में कुछ बनो या ना बनो, कुछ करो या ना करो, ये कर लेना जेंटलमैन, दुनिया की चीजें खुद चल के आ जाएंगी मेरे लिए, क्योंकि मेरा अनुभव अगर नहीं है तो क्या होगा। मैं एक अच्छा इंसान या व्यक्ति बनना चाहता हूं, किसी में ताकत हो तो यहाँ खड़े होकर, एक अगर स्टूडेंट में ताकत है और अपने पेरेंट्स से जाके कहे पिताजी मैं कभी भी आपको आप पीना के दूर देखूंगा तक कुछ नहीं रख रहे हो, हम इतने कमजोर हो गए, उस दिन आपके फादर का हीमोग्लोबिन बढ़ गया मीटर। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, फिर हुए हम बड़ी बड़ी रिसर्च, बड़े बड़े होमवर्क की बात कर रहे हैं, फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थ मुझे। और जिस दिन ऐसा होने लगेगा, हमारा युग, हमारा युवा रोजगार के लिए नहीं, रोजगार पीछे पीछे चल के आएगा। क्योंकि मैंने कभी कहा है बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर कि हर व्यक्ति को कोई ना कोई देख रहा है। यहाँ पर गौरव जी बैठे हैं, इतने छोटे जीवन में मैं अपना कई बार दाम लगा चुका हूं। जिस दिन मेरा दाम कम होता है मैं फिर से मार्केट देता हूँ, ये चेक टू मी व्हाट इज द वैल्यू, और मैं स्थान को ही चेंज कर देता हूँ। धरती नहीं चल सकती है शोभा, मैं तो चल सकता हूँ, कम से कम करके देखिए। Then I feel that you will be the one of the highest and successful person either in the research and everything. यहाँ पर मैडम ने बताया 20 लोगों को PhD करा दी, 120 रिसर्च पेपर, so many patent and design. Gentlemen, इस प्लेटफॉर्म से कहता हूँ I am not scientist. What I am? Yes, excellent academician. Yes, good administrator. Yes, I am good person. ये मैं दावे से कह सकता हूँ. Check me in my life and here what is it? अब एक अच्छा आदमी क्या होता है, इसका थर्मामीटर क्या होता है, कौन नापेगा? मेरे पापा तो कहते हैं तुम बहुत अच्छे हो, सारे हमारे रिश्तेदार कहते हैं तुम बहुत अच्छे हो, जिनके साथ हम रोज बैठते हैं शाम को, फिर से रिपीट करते रहा, जिनके साथ हम रोज बैठते हैं शाम को कहते तुम बहुत अच्छे हो। मैं शाम को किसी के साथ नहीं बैठता हूँ परिवार के साथ, ठीक है, ना ही बैठावाने की जरूरत करिएगा। चेक योरसेल्फ। सो दैट इज व्हाई गुड पर्सन क्या है, इसकी मैं डेफिनेशन दूंगा। यहाँ पर दो कंटेनर है, दिस इज द कंटेनर ए एंड कंटेनर बी। कंटेनर ए भी प्यूरिफाई का कंटेनर काम कर रहा है, कंटेनर बी भी प्यूरिफाई का काम कर रहा है। सिर्फ फर्क इतना है, कंटेनर ए से प्यूरिफाई वाटर 90% और कंटेनर बी से प्यूरिफाइड कितना है 100%। कौन सा पानी पीना चाहते? 100% वाला पीना चाहिए। एक्सीलेंट,
एवरीबॉडी वांट टू प्योरिटी, श्योरिटी, सिक्योरिटी, सेफ्टी, यही तो चाहते हो। सिर्फ एक पानी की बोतल के लिए कभी जीवन में इसको सोचने की आवश्यकता नहीं है। देन यू कैन फील इट कि व्हाट इज द गुड पर्सन। एक गूगल की कॉपी पेस्ट नहीं है, ये भी ड्रा होंगे और जो भी चीज लिखी है फोटोग्राफ को छोड़ करके मेरे सेल्फ ओरिजिन है, गलत है तो मेरे हैं, सही है तो मेरे हैं, अच्छे लगे धारण करिए, गलत लगे डिलीट करिए। मैं यहाँ पर मोबाइल, और अगर आप चाहते हो कि अगले लेक्चर में आई विल ऐड समथिंग तो मुझे मैसेज जरूर। गुड पर्सन, इस डेफिनेशन को जितनी बार पढ़ें, अपने रिश्तेदारों को रख लीजिए, अपने घर वालों को रख लीजिए, बहन भाई दोस्तों को रख लीजिए, बॉय गर्लफ्रेंड सबको रख लीजिए। चेक योरसेल्फ, क्या वो गुड फ्रेंड है, क्या वो गुड पर्सन है, चेक इट, पढ़ता हूं। गुड पर्सन इज वन हु कैन वर्क एज ए फाइन फिल्टर। एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा व्यक्ति वही है जो फाइन फिल्टर की तरह काम करे। देयर इज नो मिलावट, 100% means 100%। और क्या करे वो, to remove all types of misconception। यही तो पैदा किया जा रहा है। एक में से सत्यानाश क्या हो गया, चेक जो फ्यूजन पैदा कर रहा है। क्या वो एक अच्छा व्यक्ति हो सकता है? नहीं, ऐसा हो तो उसे हमेशा के लिए डिलीट कर। मेरा फोन चेक करिए, मेरे पास ऐसे कभी मैसेज नहीं आते, सिर्फ आते हैं तो बहुत कायदे के आते हैं, नहीं क्योंकि मुझे आवश्यकता नहीं रही। अगर आपने कोई कपड़ा पहना, कोई ऐसा निशान मार रहा, अच्छा वो आप पीपी शूट करे घूम रहे, ठीक है, यू विल डिसाइड दैट व्हाट आई विल हियर। मेरी क्या हैसियत है, कैपेसिटी है, वो मैं पहने, तुम्हारी क्या इंटेंट है। लेकिन जो पहने शरीफ अगला है, एंड प्रोवाइड द प्यूरिफाइड आइडिया knowledge to their friend society without any physical, mental, social, behavioral and biological। अभी कांड हुआ बायोलॉजिकल, मैंने इंटेंशनली डाला। आप कहते हो मैं प्यार करता हूं, इतना घटिया हो कचरा प्यार, इसलिए मैंने कहा बायोलॉजिकली हार्म। इफ यू कैन डू समथिंग और मेंटल हार्म करते हो, आपसे बड़ा कोई नहीं। आप एक अच्छा व्यक्ति बनते हो, चेक योरसेल्फ। तो इस चीज को आप चेक करें एंड रिमूव करें। मैंने उसमें दैट कि मैं एक अच्छा व्यक्ति चाहता हूं कि अगर ये लेक्चर आपके जीवन में 0.001% भी इजाफा कर दे, मेरा यह मानो 250 किलोमीटर से शरद प्राप्त हो जाएगा कि आई हैव कम ओवर हियर, ये काम करें। रावण, आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, सबसे ज्यादा ताकत रावण में थी या राम में थी? तेज तेज बोलना है। संपत्ति रावण के पास ज्यादा थी, राम के पास? ज्ञान रावण को ज्यादा था या राम को? शस्त्र ज्यादा रावण के पास थे, राम के? कैसे जीत गए? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा, वेरी गुड। चरित्र व्यक्ति को ऊपर बनाता है लेकिन युद्ध नहीं जीता सकता। और उनमें जो चीज थी, और वो चीज थी टेम्परामेंट। खाना जरा सा खराब बना है, कपड़े फाड़ने लगते हैं, हटाओ ये नहीं खाना है। मांस कमाए तेजी से बंद करके जाने लगते हैं, टेम्परामेंट। रावण का जो टेम्परामेंट था और जो उसकी दृष्टि और दृष्टिकोण में फर्क था, वो बहुत अलग था। तो मेरे साथियों, बच्चों अपना दृष्टिकोण को पॉजिटिव रखिए। दृष्टिकोण क्या होता है, दृष्टि क्या होता है? जब मैं आपको सरल भाषा में बताते हैं, जब मेघनाथ युद्ध करने जाने लगा, उसने कहा पिता इन 2 वनवासियों से घबरा रहे हो, इनको तो मैं अभी 1 घंटे में आग पार करके आऊंगा। तब वो सिर्फ दृष्टि से देख रहा था। जब वो युद्ध करने जाता है, आग को चलाता है और ब्रह्मास्त्र को दृष्टिकोण खोलता है और वो कहता नहीं, ये साधारण मनुष्य नहीं है। फिर पिता के पास जाता है कि अब मैंने दृष्टिकोण से देख लिया है ये सत्य क्या है, मैं जा रहा हूं वापस। लेकिन आप जिंदा रहना चाहते हो तो युद्ध को सुनो। अगर आपको कुछ रखना है, दृष्टिकोण साफ रखिए। जो दृष्टि से दिखाई दे रहा है, जो दूसरे कानों से आपको सुनाई दे रहा है, क्योंकि आज हमारे समाज में बच्चों के अंदर
there is a lot of turbidity, lot of confusion, lot of misunderstanding because of this reason. तो आप किस पर काम करें? Work on your temperament. Never lose your temperament. If you never lose the temperament, you will be the successful person. मैं 3 concepts पर separate lecture रखता हूँ. Concept, confidence, commitment. बस that's enough. अगर इतना कर दिया आपको कोई रोक नहीं सकता है सफलता के लिए. Time, temperament, technology, 3T. आज नहीं कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों. Never comes tomorrow. ये कहावत है beauty never does. सुंदरता और मिठाई को देख के ना मिठास का पता लगा जा सकता है. ये धीरे एहसास का विषय. इसको चेक करना पड़ेगा, इसको फील करना पड़ेगा. So you can work on it. ये मैंने इंटेंसली डाला है बर्फ को हले. हाथ बड़ी बड़ी पार्टी फ्राइडे से अच्छा आदमी ऐसे जाता है दारू की पार्टी में, उसको लगता है ओ माय गॉड हो गया. ठीक है, ऐसा फील करता है बटन डला. जेंटलमैन बर्फ को हले बनिए. आदमी बर्फ को हटा करके ये हाथ जोड़ के कहता है आप हले या ऐसी बातें करनी. ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे. मैं आज कह रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म से अगर कोई ताकत रख सकता है कहने की मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ एक बार दारू को टेस्ट किया है. कैसे किया है? ढक्कन में डाल के अंगली लगा करके ऐसे. तब मैंने कहा ओ माय गॉड, इतनी घटिया चीज को लोग पीते हैं. आई फील इट कि जिस चीज की मेरे जीवन में जरूरत नहीं उसका हम क्यों कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना, उसको अपने जीवन से दूर रखें जो कहीं कंट्रीब्यूट नहीं होती है. अगर आप अल्कोहल होते हैं तो आप एक से दूसरे पर जाते हैं और अल्कोहल होते हैं. मैंने जो ग्रीन बनाया है इंटेंशनली नीचे बनाया है क्योंकि यही गुलाटे खाता रहता. वाह 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 वाह. ऊपर थैली पर अगर ऊपर के स्टेप पर जाना है you must be a workaholic and you can accept this challenge. ये मैंने एक मैच बच्चों ने देखा होगा, बच्चों के हिसाब से डाला है. मुंबई इंडियंस चेन्नई सुपर किंग और ये 2019 का आई थिंक मैच. मैं इसको देख रहा था. वाटसन हिट पर हिट लगा रहा थे 82 रन. मलिंगा 18वें ओवर में आता है 22 उठा जाता है. रोहित सिर पकड़े हैं, अंबानी मैडम माला जप रही है. ये कुछ पड़ रहा है बचाओ बचाओ बचाओ. 19वां ओवर फिर 18 रन और 20वां ओवर फिर 6 बॉल 9 रन. व्हाट्सएप क्रीज पर मैच चालू, पूरा सन्नाटा. रोहित के पास चैलेंज, बॉलिंग किसी को नहीं. व्हाट हैपेंड? मलिंगा मैं खुद देख रहा हूं. ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड? रोहित ने ये क्या कर डाला मलिंगा को. पहली बॉल वाटसन रन लेता है, पहला रन लेता है, आउट. एकदम सन्नाटा. जहां वाटसन हीरो, मलिंगा बिल्कुल गट में मिले हुए थे और वो आउट हो जाते हैं. अब रन बचते हैं 5 बॉल और 7 रन और जेंटलमैन लास्ट में फिर से एक आउट और होकर के और 2 रन से मुंबई इंडियंस जीतती है. और नतीजा क्या हो? ये तो व्यक्ति 1 मिनट तक हीरो था घुटनों पर आ जाता है और जो 1 मिनट तक हीरो था वो कंधों पर आ जाता है. मैसेज टेक होम में है, जो भी करो सिर्फ और सिर्फ पूरा करो. एक गेम हो सकता है, एक जीवन का लक्ष्य भी तो हो सकता है. सिर्फ आपके आगे पीछे सफलता और असफलता 1 फीट का अंतर रखती है. जो 1 फीट आप तेजी से गति से डेडिकेशन से आगे बढ़ जाते हैं, आप सफल हो जाते हैं और उतने मिस हो जाते हैं तो रेड लाइन पर पहुंच जाते हैं. सो जेंटलमैन यू कैन डू इट. सच करें. अगर देखिए जब आप चश्मा खरीदने जाते हो ऐसा लगा ठीक है, फिर उससे कहते हो शीशा देखो. ठीक है, कई तरह के फ्रेम लगाते हैं. मेरे भाई चश्मा लगाइए, पहले माले पे लगाइए, इसको क्लियर करिए. ये धुंध तो कोई भी चीज छाट देगा, इसको कौन छाटेगा? So if you want to use some of thing for the purity, इस पहले माले पर लगाइए so that you will purify yourself and this. और किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है. Need to work on. खुद पर काम करो, करने की जरूरत है. Need to work on. जिस दिन स्वयं को काम करना चालू कर दोगे, आप अपने आप को स्ट्रेंथ महसूस करोगे and you will be the freedom accident to the accident. सिर्फ उससे आवश्यकता है
तो खुद पर काम कर लीजिए। तो ये हमारा पार्ट ये खत्म हो जाता है। पार्ट बी को हम थोड़ा सा जल्दी कोशिश करेंगे, लेकिन टेक केयर बिल्कुल सिस्टमेटिक होगा और ध्यान से होगा। आउटकम बेस्ड एजुकेशन एंड रिसर्च, दुनिया जहां में जितनी एजुकेशन एंड एनीथिंग इज दैट गोइंग ऑन, हमारे चाहे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हो या एआईसीटी हो, यूजीसी हो, एनी अदर बॉडी, या हमारा एनईपी अभी चालू हुआ, एवरीथिंग इज द बेस होगा। What's the outcome? Either it may be the education or either it may be the our research. So research, I no need to discuss this type of the research is going on. Quantitative, qualitative, descriptive, analytical, applied research, fundamental. So you can go through it. ये हमारे फार्मेसी रिसर्च है, जिनमें अभी अभी मैडम ने एक लेक्चर दिया है, this is related to the biotechnology. Biotechnology is a very sensitive field, very effective and useful for this purpose. Need to maintain the specific condition. आपकी जरा सी mistake connected with the system. So for this purpose, need a lot of the work. What nowadays they quite very effective. One is the medicinal device, another one is the artificial intelligence, diagnosis, pharmacovigilance, and 3D printing. इन पर सबसे ज्यादा अभी हमारी मिनिस्ट्रियां, हमारी रिसर्च काम कर रही है। एंड व्हाट इज द नीड ऑफ दिस? आज मैंने पहले ही कहा कि आई एम नॉट रिसर्चर। मैं पहले ब्लॉक में अपने आप को स्टैंड करता हूं, जिसका नाम है एकेडमिक रिसर्च। टू द रिसर्च इंक्रीमेंट लगना है, प्रमोशन होना है, प्रमोशन पे प्रमोशन होना है, फिर प्रमोशन होना है, और एक बार फिर प्रमोशन, लास्ट तक सिर्फ प्रमोशन। समाज को हम क्या दे पाएंगे मेरे को नहीं पता। अगर समाज को कुछ देना है तो इस तरह, दिस इज नॉन एज द अप्लाइड रिसर्च। वी नीड टू द वर्क ऑन द professional research. So what types of the research required, you will be trying to do. Outcome research days आपको एक 3-4 चीजें बता रहे हैं। When you can appear in an interview, so there is the some of the point they can be generally asked to. One of them is the research project publication, and reputed journal is required. Scopus, impact factor, high impact factor. Wave science commonly use the citation impact factor I10, S10, G index and F index like this. So citation is the very important. Those persons who are the working in the research, either you are in the B farm or the M farm. This is very important component. So citation should be used when content that did not honestly they you is used to support your writing. In point of आप देख लें, very important impact factor. अमूमन इंटरव्यू में generally they will discuss ये what is the impact factor, what is the utility of the impact factor. हमने एक एग्जांपल देके बताया है. So impact factor is the measure of the number of time and an average paper in the journal inside in the year. So impact factor equal to CY upon CPY minus PY minus 2. इसमें किसी को डाउट हो तो जरूर पूछ लें. Number of times we have a lot of information is the missing and the confusion. So here is the example. Let us consider any journal is the published the 2000 and total citation the 2057 and the citation number of publication is PY minus the 400 in 2001 in 2000 the 600, so that you can calculate this is nearby the 3.57 of the impact. तो H index से हमारा जरा ध्यान से सुन ले. H index, the number of publication with a citation number greater than or equal to H, then I10 is the number of 10, G index is this one. ये सवाल है अब आप लोगों से पूछ रहे हैं. टेबल नंबर 1 4 चीजें बताना है. कौन सा बच्चा खड़े होकर के बता रहा है? स्टैंड अप प्लीज. I10 कितना है पहली टेबल में, H इंडेक्स कितना है, M इंडेक्स कितना है, G इंडेक्स कितना है? कौन बताना चाहता है? जो भी बताना चाहता हो जल्दी जल्दी बताना है. एम फॉर्म कौन कर रहा है यहाँ पर? एम फॉर्म कौन है? जो एम फॉर्म कर रहा हो. ऑल आर बी फॉर्म, वो तो एम फॉर्म कर रहे होंगे. तो आपने सुना नहीं तो आपको कैलकुलेट इसलिए मैंने स्लाइडों को जम करके बता दिया.
आपको बताएं 2 एग्जाम्पल है, इन एग्जाम को मतलब सही से समझ लें तो आपको वैल्यू बेस्ड सिस्टम आ जाएगा कि व्हाट इज द रिसर्च, हमारा साइटेशन क्या काम करता है, हमारा आइटम क्या करता है, हमारा एच इंडेक्स क्या होता है, जी क्या करता है, एम क्या करता है। ठीक है, तो हम सरल भाषा में इसको चालू करते हैं, जरा ध्यान से देखें कि वैल्यू आर कम ओवर द रिसर्च। अगर हम इसमें चलते हैं तो फॉरगेट द दिस वन ब्लॉक, इसको अगर चालू करें तो देयर इज द 1 to 20 पेपर, 1 से लेकर के 20 तक पेपर है और दूसरे तरफ कॉलम है साइटेशन। ठीक है, तो अगर आप देखें नंबर 15 पर देखें, देन इज अगर इस 15 को देखें तो 15 में टोटल साइटेशन इज द 10, तो हमारा 10 इंडेक्स होता है 15, 10 इंडेक्स 15। और अगर हम एच इंडेक्स देखें तो अगर ऊपर से हम चालू करते हैं एच इंडेक्स तो 11 इज द एच इंडेक्स, क्योंकि जब हम 12 करते हैं तो 10 हो जाता है, तो इज द एच इंडेक्स इज द 11। और अगर हम जी इंडेक्स देखें, पहली टेबल में अगर जी को हम देखते हैं तो जी इज द 5, और अगर हम एम इंडेक्स को देखते हैं एच इज द 15 और 95 डिवाइडेड बाय 60, तो आप 18, यानी कि आपका 15 डिवाइड बाय 18 करें, दिस इज द एम इंडेक्स। अब सारी कहानी खत्म हो गई, कुछ पता नहीं, यानी यू कैन अंडरस्टैंड। समझ में आया नहीं आया? टीचर भी बैठे, उनको आ गया नहीं आया? किसी को आया समझ में नहीं आया? अच्छा तुम हमारे पास आ जाओ जरा। यस, मैडम के ठीक पीछे बैठे हो, आ जाओ। हाँ अच्छा, हम इसलिए क्या करवाएंगे, समझ में आ गया होगा तो सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इनको माइक दे दो, क्योंकि ये भी दूर से आए तो कहाँ है माइक? आ जाओ ऊपर, आ जाओ ऊपर हमारे। अम्बा प्रसाद। अम्बा प्रसाद, ठीक है। अम्बा प्रसाद के लिए पहले तालियां बजाओ। मैंने 4 पुस्तक पूछे, कितने पुस्तक पूछे? 4 पुस्तक। पहला है आइटम, बोलो आइटम। दूसरा है एच इंडेक्स, एच इंडेक्स, दूसरा एम इंडेक्स, एम इंडेक्स और जी इंडेक्स। जी इंडेक्स। जो भी हमारी रिसर्च हो रही है, मेरी वैल्यू क्या है, की वैल्यू क्या है, इसके लिए कोई ना कोई पैरामीटर। मैं कहूं मैं बहुत महान व्यक्ति हूं, मेरा इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, तो आप किस प्रोसेस से गुजरे हो, इसको एक्रेडिटेशन कहते हैं। हमें कहने की क्या जरूरत है? अभी अभी सुबह बातचीत हुई है कि इफ यू आर क्वालिफाइड द जीपैक्स एंड योर रैंक इन इंडिया इज द 2000, यानी कि जितने बच्चे इंडिया में बैठे आप 2000 की रैंक, आप ये नहीं कह सकते हो कि पार्शियल की टीचर ने कर दी, ये तो डायरेक्टर का जानने वाला था, ये तो रिश्तेदार था, फॉरगेट एवरीथिंग। इन द सेम वे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रिसर्च, फॉर दिस पर्पस वी नीड टू डू सम ऑफ द पब्लिकेशन। उस पब्लिकेशन की जो वैल्यू होती है वो हम इन चीजों से निकालते। ठीक है, अब आपको पहली टेबल में देखना है, थोड़ा ध्यान से सबको बैठ जाना चाहिए। अगर आप देखें इस तरह कि जब 10 से कम होने लगे, 10 से कम होने लगे तो 10 पर रुक जाना है, सीधी लाइन खींचना है, जो आए वो आई 10। 10 और 15 हो गया, बोलो कितना है आई 10? 11। ये देखो, यहाँ 10 आया, A10 आया, A10 आया, E10 आया, यहाँ लास्ट। यस सर 15। यहाँ रुक गए तो कितना है आई 10? 15। आई 10 इज 15। तो दूसरे वाले में आई 10 कितना है? दूसरी टेबल को इधर घूम करके बता। इससे सर 6। 10 बोलो 6। 6। आई 10 कितना है? 6। ठीक है, अब आया है हमारा एच इंडेक्स। एच इंडेक्स का जो मतलब होता है, जैसे हमारा पेपर है ये 10, कितना है? 10, और यहाँ पर ये कितना है? 12। यहाँ ये कितना है? पेपर नंबर 11। ठीक है, 12 है लेकिन 12
तो जहां से कम होना चालू हो जाए वहां से होता है रुक जाता है। एच इंडेक्स क्या होता है हमारा, रुक जाता है, यानी कि 10 से 12 है, लेकिन जैसे ही हम 11 पर आते हैं तो 10 है, लेकिन 12 है तो भी 10, यानी कि जब तक हमारा यहाँ ज्यादा है उससे वो ज्यादा है तो हमारा क्या हो जाता है, एच इंडेक्स उसके हमारा ऊपर चलता है। ठीक है, अब हमारा जो जी इंडेक्स होता है इसके बाद हम बताएंगे। जी इंडेक्स होता है इस पेपर का स्क्वायर करें वो साइटेशन से ज्यादा होना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 35, 25। मैं ये जानना चाहता था कि आप जान रहे हो। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, अब 25 साइटेशन देखे 28 के बाद सीधा 17 आ रहा। ठीक है, तो जी इंडेक्स कितना हो गया, 5। जी इंडेक्स कितना हो गया, 5। अब एम इंडेक्स का फॉर्मूला है, एम इंडेक्स का फॉर्मूला है एम इंडेक्स इक्वल टू एच इंडेक्स अपॉन स्टार्टिंग ऑफ द ईयर एंड ईयर ऑफ द एच इंडेक्स का डिफरेंस प्लस 1। तो एच इंडेक्स जो हमारा था वो कितना था, 15, आपको बताया था कितना था, 15 था वो 11। एच इंडेक्स 11, एच इंडेक्स 11 और ईयर कितना है 50 और स्टार्टिंग ईयर है 95। तो 11 और 95 में डिफरेंस कितना हो गया, 16 साल हो गया, प्लस 1 तो कितना हो गया 17। तो 11/17 एम इंडेक्स, जिनका एम इंडेक्स नियर अबाउट 1 जाता है या 1 प्लस जाता है उसकी वैल्यू को हम अच्छी वैल्यू करते हैं। So thank you very much. God bless you. Give a big hand. Now, let's start getting what ये सब कर, ये जो काम है ये सब कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत से साइंटिस्ट कर रहे हैं। I was in the presentation of the AICT. मैंने खूब सारी बातें की, 200 पेपर है वो, वहां के चेयर ने क्वेश्चन पूछा, जब गुप्ता you did lot of work in research, number of research paper, number of review articles, patent, so many things. How many monograph? ये चीज चाहिए, how many monograph क्या है? मैं पहला पॉइंट पता ही नहीं लगा था what do you mean by monograph? Monograph is the originality. हम ओरिजिनल तो है ही नहीं, हम तो डुप्लीकेट कट पेस्ट पे काम कर रहे हैं। अगर हो तो मुझको बताइए, एक मोनोग्राफ आई, how many institute they are or student they are working on the original of the data and you can, this is my whole piece of book. और मैं AICT CII में 5th रैंक पर जाकर भी खत्म। Another question is the patent and design. यहाँ पर तनेजा जी बैठे, बहुत गति से पेटेंट एंड डिजाइन हो रहा है। एक यूनिवर्सिटी ने 1900 पेटेंट कर दी, एक यूनिवर्सिटी ने 1900 पेटेंट कर दी, एक नाइपर ने 200 करोड़ पेटेंट पर खर्च कर दी। वहां से एक डायरेक्टर अपॉइंट किया गया कि यू कैन चेक व्हाट इज दिस। उनकी मुलाकात मुझसे हुई, जानते हो आज की डेट में अगर पेटेंट की कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है, एवरीबॉडी इज द गिव द आंसरेबल। आई एम राइट? क्या कर रहे हो भीड़ करके, और व्हाट पर्पस, क्या कर रहे हो? अगर आपके 200 पेटेंट हैं तो 5 पेटेंट मार्केट में क्यों नहीं है? और जब मैं उस व्यक्ति से मिला, हमने कहा सर आप रिटायर्ड हो गए सन फार्मा से, तो आपकी सैलरी क्या थी? बोले मेरी सैलरी 8 करोड़, जमीन खिसक गई। फिर मैंने वो कैसे? बोले हमारे 55 पेटेंट और 35 पेटेंट से 18। नेम इज द डॉक्टर रजनीश जी, हमारे यहाँ एक गेस्ट लेक्चर लेके आया था और नाइट पर उनको सिर्फ 3 लाख दे रहा था आफ्टर रिटायरमेंट कि यू कैन जस्टिफाई वैल्यू ऑफ द पेटेंट एज सपोर्टेड और सपोर्टेड बाय आवर यूनिट। आज की डेट में गति से चलिए, लेकिन आउटपुट को कभी मत, पेटेंट रखिए, डिजाइन रखिए, कोशिश करिए कि हाउ आउटपुट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज द ये पेटेंट नॉट ओनली फाइल, मैंने लाइफ डाली, छोड़ देना, ये मत करो। ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, कंसल्टेंसी एंड कॉमर्शियलाइजेशन। आज की डेट में भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसर्च पर लॉट ऑफ फंड, लेकिन दे वांट ओनली द व्हाट इज द कंसल्टेंसी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फाइनल प्रोजेक्ट। दिस वन एक लाइन
पूरे एजुकेशन सिस्टम में बाहर से आए, क्या बाहर आए कि यूजीसी ने कह दिया पीएचडी के लिए अब कोई रिसर्च पेपर की जरूरत, सर्कुलर व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप, जरूरत है या नहीं है, दिस इज द डिबेटेबल। मुझे कहने की जरूरत नहीं है इस प्लेटफॉर्म पर, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट इज द जेड वैल्यू, दिस इज द कांसेप्ट ऑफ द आवर वर्ल्डी प्राइम मिनिस्टर, कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं, इट विल नॉट टू डिस्ट्रॉय आवर एनवायरनमेंट, जीरो इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। आज आप कहीं भी खड़े होकर के थूक देना, कहीं भी कचरा फेंक देना, क्या ये पढ़े लिखे लोगों की सिस्टम है? हमारा इंडस्ट्री के जुगाड़ करो, ड्रिल करो, पानी को नीचे छोड़ दो, कभी नदी में छोड़ दो। आज हम ऊपर से देख रहे थे, मैंने सोचा यमुना का मैं फिरवण करूं, तो कहीं ना कहीं वी नीड टू द आउटपुट इन ऑल दैट प्लेटफॉर्म। सो जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट के साथ हमें प्रोडक्ट हमारा जीरो डिफेक्ट होना चाहिए, एनवायरनमेंट जीरो इफेक्ट होना चाहिए, नीड बेस्ड इकोनॉमी, नीड टू द रिसर्च, economization, consistency, reliability, productivity, time bound, easy handling and disposable system। आज की रिसर्च की नीड है, नीड फार्मास्यूटिकल रिसर्च, लैबोरेटरी जरूरत है। ये चीजें में बहुत ज्यादा टाइम ना लगाते हुए इंक्रीज द हीट वैल्यू, इंप्रूव द मेंटल सिस्टम, इनको मैं छोड़ देता हूँ। टाइम फॉर द कॉमर्शलाइजेशन, आप इस रिसर्च को काम करें, क्वेश्चनों को मैं छोड़ दूंगा, आप इनको पढ़िएगा। और फार्म 4 कौन यहाँ पर बताना चाहेगा फार्मा 4.0 क्या है? यानी स्टूडेंट, आज की डेट में हम बताएं कि हमारी इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं, फार्मा इंडस्ट्री थर्ड इन द वॉल्यूम और 13 और 11 इन द, यानी कि हमारे वर्ल्ड में हम कहते हैं हर तीसरी गोली जो वर्ल्ड में कंज्यूम हो रही है वो हमारी कंट्री को बिलोंग करती है, या पूरे वर्ल्ड में वैक्सीनेशन टॉप मोस्ट सिस्टम में। जब हम इतना काम कर रहे हैं, इतना ऑटोमेशन हो रहा है, then here is the education. When we calculating our education, then we can find out pharma 2.0. अभी भी हम उससे उठ नहीं पाए हैं, and our pharma is preparing for pharma 5.0. इतना ऑटोमेशन और फास्ट करने, तो मैंने कहा है टाइम, टेम्परामेंट, टेक्नोलॉजी। अगर आप गति से चलना चाहते हो तो चेक योरसेल्फ, time, temperament, technology. Tune with the time, tune with the technology, and tune with the temperament. तब आप मैच करेंगे कि this is pharma 4.0. Otherwise, it is possible. So check it. Our industry doing the fully automation, self-organization, manufacturing with the minimum of the disturbance of the unity. मैं इसको ethics आज स्टेट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, reproducibility. I was one of the chairperson in Naipur, Mohali. वहां पर टोटल नाइपर है, 5 नाइपर के डायरेक्टर थे। I am thankful to the session invited me. वहां पर एक डायरेक्टर खड़े होके कहा, रिकॉर्ड हो रहा डजंट मैटर, कि जो मैं रिसर्च कर रहा हूं वो भी 60% रिप्रोड्यूसिबल नहीं है। आई एम थैंकफुल। और मैंने खड़े होकर के ताली अपने दिल में बजाई थी, क्योंकि ऐसे खड़े नहीं हो सकते थे। ये सत्य बोलने की ताकत रखता है। ये 60% मेरी रिसर्च रिप्रोड्यूसिबल नहीं है, इसने खुद के लिए कहा। चेक योरसेल्फ, you what is your research and what is the reproducibility। आज ये नीड है, ये आवश्यक। तो we need the ability, first cut टेस्ट करो, एक्चुअल डेटा प्रेजेंटेशन, कॉमर्शलाइजेशन, रिजॉल्व प्रॉब्लम। और मैं आपको ये बता दूं, अभी अभी यहाँ पर तनेजा जी बैठे हैं, बहुत से लोग हैं एमएसएमई को बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी अभी रिसेंटली प्रोजेक्ट है 14 दिसंबर को खत्म हो गए हैं, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, जाति, धर्म, एरिया किसी की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ जरूरत है व्हाट इज योर IQ, व्हाट इज योर आइडिया, व्हाट इज इनसाइड यू कैन डू, दिस इज इम्पोर्टेंट। 20 लाख रुपए को देते हैं, 1 करोड़ उसको एग्जीक्यूशन के लिए देते हैं। ये हमने पैम्पलेट लगाए, 14 तारीख निकल गई है। एंड देन दिस इज आवर इंस्ट्रूमेंट। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे इंस्टीट्यूट में IISF कॉलेज ऑफ फार्मेसी, आई हैव रिसीव्ड फर्स्ट ऑफ द प्रोजेक्ट द MSME जो 20 लाख रुपए का मिला था। इस प्रोजेक्ट का हमने इनॉग्रल किया है विद द प्रेजेंस ऑफ द डायरेक्ट MSME। दिस इज चैनल 1 एंड द अवेलेबल मार्केट
those person who is the working in the pharmacology, so it will be the one of the most effective and useful instrument जो हम बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रहे हैं। अभी 2 प्रोजेक्ट हमें रिसेंटली मिले हैं and one project is also for the पूरे कंट्री में 5, if I am not wrong correction कर देंगे, अभी 20 करोड़ की ग्रांट में की कंट्रीज में फार्मा के 5 MSME मिले हैं, 2 ISF को मिले हैं, उसको तालियां नहीं बजाना, लेकिन एक जो है गुरु गोविंद सिंह को मिला है, so give a big hand to this guy। और इसके बाद एक टीम में मिला है और एक कई साल से, तो सब आपके कॉलेज में कोई चीज ऐसी आए पता ही नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। इंटरेक्ट टू योर टीचर, गो थ्रू द नोटिस बोर्ड और अपने व्हाट्सएप फेसबुक पर अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए उसको बाउंस करें, क्योंकि आपकी पहचान आपका कॉलेज है। और जब आपका कॉलेज है, आज भी जो आप कॉन्फ्रेंस हो रही है, पूरे व्हाट्सएप और फेसबुक पर छा जाना चाहिए कि नंबर ऑफ द साइंटिस्ट ओवर हियर दे हैव डिलीवर्ड द जॉब लाइक दिस, लेकिन हम वो नहीं करते हैं जो करना चाहिए। सो यू कैन डू, वैल्यू आपके कॉलेज से है और हमारी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ आपसे, बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए। तो प्रोजेक्ट इंटरप्रेन्योर बनने के लिए हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, हमारा ब्रेन आप फुल ऑफ आइडिया होना चाहिए, एंड आई एम लुकिंग फॉर द इन्वेस्टर एंड अपॉर्चुनिटी, नो सराउंडिंग वैल्यू एंड डिस्कशन, माउथ कम्युनिकेटिंग द विजन, ear listening to the customer feedback, heart full of passion, stomach trust your gut, legs keep them going on the tough time, feet is the time। इसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, हमने भी कहीं से लिखा है, पढ़ने में अच्छा लगा था इसलिए, लेकिन मैं एक चीज आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, जो हमारा बॉडी लैंग्वेज है, अभी आपके टीवी पर सार्क इंडिया टैग आता है, कितने लोगों ने देखा है? प्लीज आंसर, सार्क इंडिया टैग कितने लोगों ने देखा? वेरी गुड। जब मैं सार्क इंडिया टैग देख रहा था, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सार्क इंडिया टैग देख रहा था, एक व्यक्ति ने, पंखा होता है उसमें 9 इंच की ट्यूब लगी होती है, किसी में 1.5 फीट की, उस ट्यूब को सिर्फ उस रॉड को बनाया है और उसको लाख का वो मिला हुआ है, उसको लगभग 5% या 2% इक्विटी मिली होगी, ठीक है। तो आप सोचिए उसने क्या कर दिया हो। जब एनालिसिस किया गया है, हर 1 घंटे में कंट्री के अंदर 1 सुसाइड हो और 107 सुसाइड में से लगभग 90% सुसाइड घर में लगा हुआ पंखा ने बात, क्योंकि वो सरल साधन है। और एक और आता है, दूसरा होता है जिसे लात मार के गिराता है और आदमी खत्म। जब उसने देखा ये सिर्फ ये 2 सेकंड का या 5 सेकंड का हो, तो क्या उस 5 सेकंड में अगर आप आदमी को बचा सकते हैं, जैसे ही अगर उस रॉड में वो होगी, तो जितने भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है सबकी रॉडें बदल दी, करोड़ों रुपए। और हुआ क्या कि पंखे का वजन 5 किलो है, इसकी स्ट्रेंथ 15 किलो कर, जैसे ही व्यक्ति लटकता है उसकी रॉड नीचे आ जाती है, स्टूल को पैर में मार दो आप नीचे आ जाते हो, और धरती हमारी माँ है, वो कहती है आज मैंने बचाया है, कल तू खुद बच जाना। और 2% में आदमी तो इसको स्लाइड आगे बढ़ाना, स्टार्टअप की बात कर लेते हैं, वहीं से कर दो इसको। यस दिस वन, स्लाइड आगे बढ़ा दो। ओके चलिए जल्दी जल्दी से खत्म करते हैं। बेस्ट स्टार्टअप इंडिया के सिर्फ आपको नाम देना चाहते हैं फॉर मोटिवेशन के। दिस इज द मिस्टेक व्हाट वी हैव टू डू। आपको इसके बारे में बताना। मेरा एक फ्रेंड है, मैं अपने फ्रेंड के यहाँ गया, मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोले सर इंडस्ट्री लगा रखी। तो मैंने कहा चलो इंडस्ट्री घूम के आते हैं। बोले वो तो बंद है। तो हमने यार इंडस्ट्री लगा रखी है, बंद है, घूम के आते, तो जाना क्यों नहीं चाहते? बोले हमको 2 करोड़ रुपए लोन मिला। हमने फिर बोले 50 लाख रुपए लगा दिए। हमने आप बोले उसमें ताला डाल दिया। हमने आप बोले पुलिस आई 2 बार, एक दिन रह के आ गए। हमने आप बोले बैंक कहती है कि 20 लाख और ले लो इसको चलाए। व्हाट वी आर डूइंग जेंटलमैन में क्या मेंटलिटी हो गई है? सिर्फ इसी काम में लगे होंगे, धोखाधड़ी बैंक से, धोखाधड़ी परिवार से,
धोखाधड़ी गवर्नमेंट से, धोखाधड़ी से। मैंने उसको समझाया ये रस्टिंग कर रहे हो, इसमें 50 लोगों का फैमिली और जीवन चल जाएगा। व्हाट इज डूइंग जेंटल, घर में पड़े पड़े 1.5 करोड़ का एंजॉय करो और फिर से वो 20 लाख दे देंगी तो आप फिर उनका एंजॉय करने लगे। आज की देश में यहाँ पर जितने अगर गलत हो तो बता देना, कम से कम 20 से 30% इंडस्ट्री की ये दुर्दशा है, क्योंकि हम सिर्फ दुरुपयोग। तो ऐसा ना करें, जब भी आपको मिले यू टेक द एक्सीलेंट आइडिया, यू नीड टू द वर्क और काम करिए, उसको करने की आपको आवश्यकता है। आपको एक एग्जाम्पल और दे देना चाहता हूँ। यहाँ पर बुद्ध जी भी बैठे हुए, मेरे पास 25 साल बाद एक फोन कॉल आया जोधपुर से, डॉक्टर DS सर का। तो मैंने कहा सर और कैसे मित्तल जी का? बोले बहुत बढ़िया हूँ, आज तुम्हारी याद। तो मैं तो धन्य हो गया था 25 साल बाद लाचू के एक्सपीरियंस पर, फार्मेसी की नहीं ओवरऑल लाचू के। तो वो मैंने कहा सर मैं आपसे सर आशीर्वाद चाहता हूँ। बोले देखो तुम करते हो डिफिकल्ट, हम कैसे रिसर्च करते हैं सरल। फिर हमने आगे पूछा सर, उन्होंने कहा कितने साल मैंने लाचू, कितने साल? 38 ईयर और 22 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? 60 साल हो गए। बोले 2 दिन थे जो दीपावली की छुट्टी के कट ही नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा आज कुछ लोगों को फोन लगाते हो, हमारा भी नाम। फिर मैंने आगे बढ़ा तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मेरा दामाद नौकरी छोड़ के आया, उसका 70 लाख का पैकेज। कितने का पैकेज था? नशे में काम कर रहा होगा। 70 लाख का पैकेज छोड़ करके आया है। तो यू कैन इमेजिन डॉक्टर DS मित्तल क्या कर रहे होंगे? उनकी करोड़ों रुपए की कंसल्टेंसी है, करोड़ों रुपए की। नो एम.Pharm, नो PhD, उन्हें कभी नहीं कराई है। एक बार कंसल्टेंसी के छोटे छोटे चीज के लाखों में पेमेंट होते हैं। 70-80 कंपनियों के वो कंसल्टेंट है। He is the dedication। और आज भी 85 ईयर की उम्र में उससे कहते हैं कि मैं 8:30 बजे घर से जाता हूँ, 1:30 बजे आता हूँ, 3 बजे तक खाना करके रेस्ट करता हूँ और फिर इंडस्ट्री में जाता हूँ और फिर 8 बजे घर आता। काम क्या है? यहाँ पर बहुत से लोगों ने कभी उनसे बात हो, डॉक्टर SS शर्मा जी जो आपके डिप्स में रहे, शर्मा सर थे, वो हमारे यहाँ प्रैक्टिकल लेने आए, बड़े गुस्से में आए, लाचू में आई वाज देयर लेक्चरर। बोले यार साड़ी ले गए थे उसकी 5000 की साड़ी उस समय 96-7 में, और जरा सा बाहर निकले और इसमें पानी गिर गया और इसकी बंदिश खत्म। मैं मित्तल साहब के कहा सर एक्सपर्ट आए हैं और उसे क्या ले जाए, आप स्कूटर दे। उन्होंने स्कूटर दिया। मुझे बात क्या है ने ये, जब उस दुकानदार के पास गए उसने कहा सिर्फ मैं इसको ब्लीच कर सकता हूँ, ब्लीच से ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, और जो कलर का वो चढ़ा। वो गुस्से में साड़ी लेके आया। मित्तल साहब ने मुझसे क्या कहा, कितने की साड़ी हो? हमने सर 5000। बोले 5000 दोना यार, ये तो हम लाखों रुपए देंगे। दिस इज रिस्क। और उस साड़ी के कलर फिक्सिंग से उन्होंने कम से कम नहीं तो कई करोड़ रुपए कमाए होंगे और 70-80 कंपनियों को कंसल्ट। This is the actual the research to commercialize your idea and your view. So give a big hand to success for the person who is dedicating what is required. यार मैं आपको बता दूं, एक बार उन्होंने हमें बुलाया, ये आपको एक मुझे बुलाया। बोले राजस्थान के अंदर लोगों को थायराइड प्रॉब्लम, क्योंकि आयोडीन की कमी। तब तक मुझे पता नहीं था रिसर्च क्या होती है और पढ़ाना आना। बोले जो प्रोडक्ट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, एक ही क्राइटेरिया की है कि अलग अलग है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन किसका काम करती है? प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। क्लोरीन किसका काम करती है? करती नहीं करती है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। लेकिन आयोडीन नहीं करती, क्योंकि आयोडीन इज द इनसॉल्युबल इन वाटर। जब हम KI के साथ इसको मिलाते हैं तो पिंक कलर आ जाता है। लाल पानी कौन पीना चाहेगा? लेकिन उन्होंने देखा कि आयोडीन की कमी को कैसे पूरा किया जाए, उसको एमॉर्फस बनाया, उसकी टैबलेट मैंने पंच की और वो आयोडीन की टैबलेट की 5 फैक्ट्रियां डाली गई हैं जो कि पूरे मिलिट्री को सप्लाई है कि व्हेन यू आर, जो पानी की बकेट टांगे रहती, आज गोली डाल लीजिए, इट कैन
purification as well as complete the requirement. This is our product. Dr. Alok ji ने डेवलप किया है, 1 and done मार्केट में लॉन्च है. This is our startup of IISM College of Pharmacy and most probably we can go. हम बेच नहीं पा रहे हैं तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके आगे बढ़ना चाहते हैं. अगर खरीद करके बेचना चाहते हैं अच्छा है, मैंने पी के देख लिया है एक बार. सुबह से शाम तक नो टी नो कॉफी एंड यू फील द एनर्जेटिक सो यू कैन एंजॉय. एक इस व्यक्ति को मैं बताना चाहता हूँ. इस व्यक्ति को जानते हो? कौन जानता है इनको? प्रोफेसर सरनजीत जी को नाम किसने सुना? प्रोफेसर सरनजीत जी वेरी सीनियर प्रोफेसर में, ये उनके ही पुत्र. एक दिन मेरे पास बैठे बातचीत करने लगे. बोले यार हमें अपना जो मकान है उसको मॉर्गेज करना है. क्यों करना? बोले प्रदीप मान नहीं रहा है, इसको एमबीए करना है. ही डिड द बीफार्म एमबीए नर्सिंग ओनली मुंबई. तब भी मैं सोच के परेशान था, मोहाली में रहता था. यार नाइपर चंडीगढ़ जैसी जगह में रहने वाला बंदा मुंबई किस लिए जा रहा है? पार्ट पर वो आ गया. इस व्यक्ति की नौकरी लगी 1 करोड़ रुपए की, जिसमें इसने 1-2 साल. फिर कहने लगा रहा है वो मान ही नहीं रहा है, उसने नौकरी छोड़ दी. अरे क्या करवा है, नौकरियां मिल नहीं रही है. एमबीए आपने फ्रांस से करा दिया, क्या करना चाहता है? बोले वो एम्बुलेंस का काम करना चाहिए. आई सरप्राइज. ही इज द सीईओ. स्टार्ट विद द 5 एम्बुलेंस. ये मैंने जब पहली स्लाइड पर हम बात करते हैं, जब मैंने फोन करने से पहले ये नेट से उठाया कि बिगेस्ट फ्लाइट ऑफ द एम्बुलेंस अक्रॉस द तेलंगाना है एपी. मैंने कहा सर ये डेटा सही है गलत है? बोले तो बहुत पुराना है. राइट नाउ मोर देन 3000 एम्बुलेंस इन पैन इंडिया एज वेल एज द एयर लिफ्टिंग. दिस इज द स्टार्टअप विद द वेरी एंड और फिर मुझे पता कैसे लगा, मेरे एक रिश्तेदार ने कहा था कि आप क्या कमाते हो, अगर आपसे कोई पूछे तो ये कभी नहीं बता. बोले क्या बताना? हमने कहा बोले खर्चे बताना, अंदाज हो अपने आप. ऐसा ही मैंने उनके साथ किया. वो हमसे कहने लगे कि 200 गज का मोहाली में मकान जिसकी कॉस्ट 1.5 करोड़ होती है, लेकिन हम 400 गज का लेना चाहते. हमने सर हस्बैंड वाइफ क्यों लेना चाहते? बोले प्रदीप नहीं मान रहा है. समझ गया था कि अब एम्बुलेंस की ताकत पूरे वर्ल्ड में चल रही है, अब 400 गज का होना ही चाहिए, होना ही चाहिए. आपको लग सकता है तो ये है प्रदीप सिंह जी. इनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ. एंड हाउ टू अचीव योर गोल, ये मैंने एक लाइन लिखी है. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन. दाल रोटी के लिए सबसे, दाल रोटी के लिए ठीक है. अब क्या चाहिए बोले? परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन. पर थोड़ी लग्जरी भी तो झुकना चाहते हैं. कौन सी प्रैक्टिस करूं? परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन. इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे. दाल रोटी खा लो, घर के मकान में रह लो, दैट्स इट. नहीं चलेगा. टेक्निकल परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन. क्या टेक्निकल परफेक्ट प्रैक्टिस कर रहे हो? क्या सिर्फ प्रैक्टिस करने में लगे हो? एक किसी ने डाला था, मुझे दुख हुआ था उस वक्त, मैंने वो स्लाइड नहीं डाली. एक ट्रैक के पीछे लिखा हुआ था कि गधा बहुत मेहनत करता है. आपने कोई करोड़पति गधा देखा? एक किसी ने मैसेज डाला था प्रोफेशनल ग्रुप. क्या क्या कमेंट लिखे थे. मेरे को क्रोध आ गया और मुझे क्रोध इस बात पर आया था कि उसको गधे को नहीं पता है, लेकिन गधा जब मेहनत करता है, आर चलता है, बर्बाद आगे बढ़ता है, उस गधे को हम करोड़पति देखना चाहते. चेक योर सेपरेट. एक ट्रिक के पीछे लिखा कि कोई करोड़पति गधा बताइए. आज मेरे पेरेंट्स अगर आईएएस ऑफिसर नहीं है, मेरे पेरेंट्स के पास गरीबन में लेकर के मुझे लायक बनाए, इससे बेहतर कौन हो सकता? चेक योर चेक. एडवांस technical perfect practice makes a child. Not only this, if baseline advanced technical perfect practice makes a perfect. And last one is the super spaceman. चेक एक्सेल कहाँ खड़े होते हो? जिस स्टेप पर खड़े हो उससे आगे कोशिश कीजिएगा. And you can feel that the sky have no limit. तो आप
दी और आज की ताकत की भी कोई लिमिट। ये मैंने पंक्तियां लिखी हैं जिस पर मैंने जैसे लगभग 5-6 घंटे में बोला था, सिर्फ इनकी पंक्तियों को मैं पढ़ देता हूँ। गैर किसी से ना करें, रखे सभी से दे, दहलीज लांग ना चले से, वन से चल मन की ना कर, रख जननी से दे, देह रहे धीरज रहे, रहे समय की खैर, ऐसी करनी कीजिए, रहे सब संतनता में, प्यार मोहब्बत से रहिए। क्या परफॉर्मेंस पर देना चाहिए। और हमारी अंतिम स्लाइड है, किसी को नुकसान पहुंचाए उन्हें अपने जीवन का आनंद लो, क्यों किसी को छेड़ रहे हो, जॉन छुए। इसमें मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक बार अमिताभ बच्चन को मारने के लिए किसी ने सुपारी दी, पिक्चर की बात है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे आम मानव के लिए सुपारी दी। आदमी का काम मारने का, पैसा लेने का। उस आदमी ने जानते हो क्या कहा, जंगल में से बहुत कम बचे हैं और मैं शेरों का शिकार। आज समाज में अच्छे लोग बहुत कम बचे हैं, मैं जीने दो, उन्हें मत छेड़ो। मेरा तुम्हें जो दिल करे, लेकिन उनकी ताकत और उन्हें जीने दीजिए, क्योंकि अच्छे लोग बहुत कम हैं। इनको पहचानते हो? कौन पहचानता है? नहीं पहचानते, मैं बताऊं। शी इज द फर्स्ट फार्मर लेडी इन इंडिया। शी इज द फर्स्ट फार्मर लेडी। ये भारत की पहली महिला है जिन्होंने बी फार्म ग्रेजुएट किया था। पिछले 2-3 महीने में नहीं रही डॉक्टर एस.आर. जैन मैडम। जब मैं 27 साल बाद किसी फंक्शन में मिला और मैं निकल रहा था, इन्होंने हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, घनश्याम, मैं जमीन पर ही बैठ गया, हो भाग मेरे, एक टीचर ने मुझे मेरे नाम से संबोधन किया, इससे बड़ा भाग क्या हो सकता। आज का ये लेक्चर इन्हीं मैडम को समर्पित है, नमन है। मैं हाउस से निवेदन करना चाहता हूँ कि 1 मिनट खड़े होकर के हम इनको सच्ची श्रद्धांजलि दे सकें, क्योंकि ऐसे पल और वक्त बहुत शांति। This is my last class. Thank you very much. God. Thank you so much, Pastor. I am highly impressed. First of all, I want to thank Dr. Kumar Gaurav sir, who provided for the pharmacy for giving me this opportunity. Gupta sir, आज मैं कृतज्ञ बोलता है, मैं उस भाग्य नहीं कर रहा हूँ। मैं गुप्ता जी से बी फार्म का स्टूडेंट रहा हूँ, इनके साथ एम.फार्म किया है, मेरे पीएचडी गाइड भी है। जो 14 बच्चे पीएचडी कराए, उसके बच्चा मैं भी हूँ। सर जिए तो जिए कैसे, ये लाइफ के फिलॉसफी सर ने दी, बहुत ही बढ़िया थी। और लास्ट नाइट, एंजॉय योर लाइफ, ये सबके सपनी लेक्चर। सर ने अपने लेक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहले बताया व्हाट डू वांट टू लाइफ, हम जिंदगी से चाहते क्या है। सब सही है, आदम चाहते सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस फ्री लाइफ। जो ज्यादा इस्तेमाल होता है तो जल्दी खर्च होते हैं। मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, तो बी फार्म में था, मेरे कंधे तक बाल थे, ज्यादा दिमाग इस्तेमाल हुआ तो ज्यादा बाल झड़ने शुरू हो गए, तो दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो गया। इसलिए लाइफ को स्ट्रेस फ्री करना चाहिए। सर ने बोला कि अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस फाइंड आउट करनी चाहिए। किस तरह से अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस को स्ट्रेंथ कन्वर्ट करें। हमारी लाइफ की प्रायोरिटी फिक्स होनी चाहिए, हमें क्या करना। आज हमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारी हेल्थ, फैमिली है। उसके बाद सर ने हमें गुड ह्यूमन बीइंग की डेफिनेशन दी। सर ने उसका एग्जांपल वाटर प्यूरिफिकेशन दिया कि 99% प्यूरिफाइड वाटर पिएगी, 100% प्यूरिफाइड वाटर पिएगी।
कौन 100% प्यूरिफाइड कौन, उसके लिए हमें हमारी लाइफ हमें साफ लिक्विड चाहिए। सर ने टेम्परामेंट का कंसेप्ट दिया, 3C and 3D कंसेप्ट, 3C कंसेप्ट कॉन्फिडेंस कमिटमेंट है, टाइम टेम्परामेंट का सर ने कंसेप्ट दिया। डेफिनेशन ऑफ वर्कaholic दिया, दैट इज ग्रेट, कि लोग आजकल एल्कोहलिक होना चाहते, वर्कaholic नहीं होना चाहते, वी शुड बिकम अ वर्कaholic। इसके बाद सर ने रिसर्च के ऊपर आउटकम बेस्ड एजुकेशन रिसर्च लेक्चर है सर ने, इसके अंदर एकेडमिक रिसर्च और प्रोफेशनल रिसर्च को बड़ा सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया सर ने। इसके बाद साइटेशन कंसेप्ट, साइटेशन क्या होते हैं, I10 इंडेक्स क्या होता है, H10 इंडेक्स क्या होता है, G इंडेक्स क्या होता है, व्हाट इज M इंडेक्स, वेरी लेमन लैंग्वेज में हर बच्चे को समझाया क्या चीज होती है, व्हाट इज द प्रेजेंट नीड ऑफ वर्क, आज हमें जरूरत क्या है रिसर्च की। एग्जांपल नाइपर के दिया कि आज की रिसर्च मानती है मोनोग्राफ, पेटेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ना कि रिसर्च पेपर पब्लिकेशन। पब्लिकेशन तो डिपेंड नहीं करता, पेटेंट ट्रांसफर की है, पेटेंट किया आपको पेटेंट ट्रांसफर की, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस हमने कंसेप्ट ऑफ जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट बताया सर ने। फिर फार्मा 4.0 के बारे में बोला। इसके बाद सर ने बोला एंटरप्रेन्योरशिप, बड़ा सुंदर एक्सप्लेनेशन एंटरप्रेन्योरशिप की दिया। सर आपकी पर्सनालिटी में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन आज हम सब बड़े खुश हैं कि आप लेक्चर सुनने को मिला। वी आर ऑल ब्लेस्ड। इन्हीं सब के साथ में सबका बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। Thank you very much, sir. Thank you very much. Now I would like to request Rohit Dutt sir, our principal sir, to please felicitate Dr. G. D. Gupta sir. Please, sir. Sir, I request you to please felicitate some of our resource persons. Dr. Alok Sharma, ISF College of Pharmacy. Please, sir. Mr. Ankur Agarwal. Mr. Ankur Agarwal, Assistant Professor, JIPSR, Gwalior. Dr. Akash Jain, Professor, MMU, Malana. Next is Dr. Akash Jain, Professor, MMU, Malana. Next is Dr. Jasmine Chaudhary. Dr. Abhimanyu Rai Sharma, KDL College of Pharmacy, Jagadri. Dr. Prasjot Singh, Associate Professor, CDL College of Pharmacy.
Mr. Sahil Diman, Assistant Professor, Ganpati Institute of Pharmacy. Mr. Sahil Diman, Assistant Professor, Ganpati Institute of Pharmacy. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Now we shall be again meeting after 15 minutes for the cultural program till the stage is ready. So please wait for that. Dr. Jasmine Chaudhary, she is here now. Associate Professor, MMU Milano. Dr. Kalpana Garg, Associate Professor, Serial College of Pharmacy. Thank you very much. आप भी आते हैं तो एंजॉयमेंट हाँ इसकी डोंगर बोलते